Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Rajpoot Tech Academy, and today in this video tutorial you are going to learn how to add or remove a filter in Excel sheet or table when you are working in Excel. तो इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में वीडियो लेसन में आप सीखेंगे कि किस तरह आपने एक्सेल शीट में टेबल में और डेटा में कॉलम्स रोज में कैसे आपने फिल्टर को ऐड और रिमूव करना है. So without wasting much time, let's start the lesson. First thing you have to do is to select that data or table where you want to add filter. First select that table or data, and after selecting the table go to the home tab. सबसे पहले आपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने होम टैब की तरफ चले जाना है. And from the home tab go to the editing section. And in the editing section you are watching here sort and filter. Click on the sort and filter, and at the end you're watching the filter icon and the filter name. You'll have to click on that and your filters will be added in the table. कि होम टैब से आपने आ जाना है एडिटिंग सेक्शन में और यहाँ पर आपने सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक कर देना है और बिल्कुल चौथे नंबर पर आपको नज़र आ रहा है फिल्टर, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है तो आपके फिल्टर ऐड हो जाएंगे. नाउ सी द फिल्टर आर एडेड इन द शीट or data table, and now you want to remove or delete this table. You are not in need of this table or filters and you want to remove these filters. How will you do that? First you will have to select, again same process, select. After selecting go to the home tab, same process, and from the home tab go to the editing section, and from editing section click on sort and filter, and again click on the filter icon and your filter will be removed. तो यहाँ दोबारा सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है कि डेटा को टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब की तरफ चले जाना है. होम टैब से फिर डेटा फिल्टर सेक्शन एडिटिंग सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करके फिल्टर पर आपने दोबारा आपने क्लिक कर देना लेफ्ट बटन के साथ, तो आपके फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे. Here you see on the table the filters are removed. So there are two ways to add a remove filter. This is the you see as you have seen that I have added and removed the filter with the help of mouse left button, selecting and going to the home tab. And another way to add or remove filter is the shortcut key from the keyboard. First you have to select that data or table, control A or with the help of mouse left button, and after selecting click control shift plus L key from the keyboard. You'll have to first select the data or table, and after selecting the data or table press control shift plus L key from the keyboard to add filters. Control shift plus L key. And now you see on the table that by pressing control shift plus L key from the keyboard the filters are added. कि दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपने कीबोर्ड की मदद से पहले उसको शीट को टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल की प्रेस कर देना है, तो आपका फिल्टर जो है ऐड हो जाएंगे. और अब अगर दोबारा आपने इनको रिमूव करना है, हटाना है कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो कैसे आप रिमूव करेंगे? तो सेम प्रोसेस, शीट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल की दोबारा प्रेस कर देंगे तो आपके जो है फिल्टर रिमूव हो जाएंगे. Now you see by pressing control shift plus L key from the keyboard the filters are removed. So in this way you can add or remove filters your data or table or spreadsheet while working in Excel. Thanks for watching. Thank you.